नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणकम, वेलकम टू डायनामिक टॉक्स विद डॉक्टर आदिल चिमथानावाला। और आज हमारे साथ है डॉक्टर अनिल रेड्डी। अनिल, डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ, हु आर यू, वेयर हैव यू स्टडीड एंड यहाँ तक कैसे पहुंचे? Hello, I am Dr. Anil. I have studied my BHMS from Dev's Homeopathic Medical College, Hyderabad, and I was following you since 2016, sir. So I saw you managing different critical cases and cancer cases and cardiac cases. I never saw anyone managing cardiac cases with homeopathy. So I was fascinated. I came to winter school in 2017. So since then, I'm in regular touch with National Academy of Homeopathy. So, what is your question today? So everyone asked me this question: do you manage? How do you manage cardiac cases with homeopathy? Do you include allopathy along with homeopathy, or else what is your approach in this? Yeah, very very good question, because since I have both the degrees, so many people feel के इमरजेंसीज आती होगी तो एलोपैथी देते होंगे और लॉन्ग टर्म क्रॉनिक केसेस के अंदर होम्योपैथी देते हैं। ऐसा नहीं है। Like if you stay with me and if you there in my hospital, a lot of cases are admitted, acute cases of heart disease. Mostly मेरा cases I practice is cardiology. तो we have various types of heart. तो heart attack छोड़ के एक्चुअल हार्ट अटैक जहां पर थ्रोम्बोलाइसिस करना पड़ता है, स्टेप्टोकाइनेस देना पड़ता है या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, ओनली दोस छोड़ के बाकी मोस्ट ऑफ द कार्डियक इमरजेंसीज आल्सो है, कार्डियक केसेस, चेस्ट पेन, अंजाइना पेक्टोरिस है या पेरिकार्डाइटिस है, हार्ट की जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाना, उसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है और मायोकार्डाइटिस। ऑल दीज थिंग्स दे नीड एन आईसीयू। सो either in my hospital or wherever I admit my patients, I manage it with homeopathy exclusively. And if I feel कि भाई नहीं, this is not my case, so I would rather refer it to a proper cardiologist जो एलोपैथी करता है, rather than me giving both होम्योपैथी प्लस एलोपैथी। तो ये मेरा शुरू से ही ये मेरा टेम्पटिंग बहुत है, बिकॉज क्वालिफिकेशन मेरे पास दोनों है। तो इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस वाज क्वाइट टेम्पटिंग, बट आई रिफ्यूज दैट बिकॉज फिर आदत सी बन जाती है, देन यू डोंट कांट गेट कॉन्फिडेंस टू in homeopathy only. इसीलिए शुरू से मैं I had kept this approach that whatever done, if I can't manage it, I would obviously refer the case, but I will not do both the systems. करना है तो मैं homeopathy ही करूँगा. And of course it was not a smooth journey. Plus minus बहुत हो गया. Sometimes you need to take support of a allopathic colleague as well, because अभी left ventricular failure बहुत ही severe है एंड वहाँ लैसिक्स जैसी दवा देने की जरूरत पड़ रही है। होम्योपैथी में हम लोग सर्टेन ड्रग्स अगर देते हैं एंड कुछ भी काम नहीं कर रही है, सो वी कांट वेट फॉर द पेशेंट टू गो डाउन स्टिल। तो या वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट है प्लस में, सो होम्योपैथी इन आईसीयू इज नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ मैनेजिंग पेशेंट। मेनी टाइम्स आई गेट कॉल्स जहाँ पेशेंट्स ऑलरेडी मेनी एलोपैथिक ड्रग्स बट स्टिल गोइंग डाउन, वेंटिलेटर पे है या बीपी ऊपर नहीं आ रहा है। तो हम बहुत सारी मेडिसिन दे के बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन है हमारे पास जो हम लोग सिलेक्ट करके देके बीपी ऊपर ला जा सकते हैं, यूरिन आउटपुट बंद हो गया तो यूरिन ला सकते हैं, या वी कैन असिस्ट द एंटायर प्रोसेस ऑफ हीलिंग। एज फार मी इज कंसर्न, आई एम कंसर्न ओनली होम्योपैथी, वेदर इट इज इमरजेंसीज, वेदर इट इज एक्यूट केसेस या लॉन्ग टर्म क्रॉनिक केसेस। So thank you very much, Anil, for coming over here and asking questions. Thank you, sir. That was very satisfying answer.